Good morning, all of you. I hope audio and video, in fact, the slides are okay. It's completely visible and audible clearly. Susmita, good morning. Sikha, good morning. Jai Jagannath. All okay. Good morning, Sangeeta. Good morning, Rajendra. Today is 8th August and we will discuss the national and international news. Okay, so let's start. Today's topic, groundwater contamination. The second one, inward looking policies. Third, AU Small Finance Bank. Fourth, CAG and PAC. CAG, that is Controller Auditor General and Public Accounts Committee. Kabutarkhana, we'll discuss about it. It's a quite interesting case study for your GS paper 1. Honor killing, another topic which is related to GS paper 1. Indian society, fear of losing schools, and apart from these topics we have few Odisha related news as well. So let's start. The first one is the groundwater contamination. How groundwater contamination is fueling chronic illness. Dependence on groundwater, 85% of the rural drinking water and 65% of the irrigation water in India comes from the groundwater. So groundwater is a major source of drinking water for the household people and the irrigation which is supporting the agriculture. Once considered pure, groundwater is now polluted by nitrates, fluoride, arsenic, uranium, heavy metals, industrial toxins and microbes. So if you see the contaminant or what are the contaminating factors, the first one is nitrate. Nitrate कोठो आपनकर आसुची खास करके chemical fertilizer और खास करके agriculture sector पाई chemical fertilizer septic leakage and health effect कोण blue baby syndrome जदि आपण NCRTs भी पढ़ी थिबे methanoglobinemia NCRTs रे भी मेंशन अछि that due to excess content of or excess quantity of nitrate health effect आपनकर blue baby syndrome को आजे. High risk area कोण पाई देखंतु पंजाब and Haryana, and this Punjab Haryana is from 1960s 70s जेतेबेले ठू हमरो green revolution was started, and these belt are accessing using this chemical fertilizer with respect to the green revolution to increase the agricultural productivity in the country. So say agriculture जो आपनकर land अछि या जो आपनकर excess runoff due to heavy irrigation as well, this fertilizer गुडिको कोन करूची not only the groundwater, the almost areas nearby these cultivable land सेगुडिको से contaminate करूची. For example pond, for example जोडिको wetlands गुडिको अछि. Okay, so 56% of the district exceed safe limit. The second one is the fluoride. Fluoride source होची zeogenic, that is आपनकर देखिबे excess, I mean it depends on जो आपनकर geomorphological factor, zeogenic, and health effects जदि देखिबे skeletal and dental fluorosis. Area कोन अछि Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, MP, UP, these are the high risk areas. If you see the arsenic, again geogenic factor worsened by over extraction of the groundwater. Okay, and आपनकर जो geological factor भी अछि जदि को पाखापाखी अंचल रे mining देखिबा को मिलुची और excess land degradation देखिबा को मिलुची. Let's say river belt रे mining चलिची, so these are the places where you will find the more amount of arsenic. So results in skin lesions, gangrene and cancer. Gangetic belt खास करके West Bengal, Bihar, UP, Jharkhand, Assam, these are the area, the Gangetic belt where Ganga river flows. Apart from that, uranium, geological zones, phosphate fertilizer and over extraction of the groundwater. I think few months ago, I think last year in fact,
October November time re, if you have seen, the Bangalore, the Silicon Valley of India, people started leaving Bangalore due to this groundwater contamination and shortage of water. So this is one such factor. The over extraction of the groundwater leads to the pollution or contamination of the groundwater. Okay, and these are the results. So uranium जदि excess content रहुची, then problem is the chronic organ damage and nephrotoxicity, that is related to kidney problem. And if you see the region, the Punjab, Andhra Pradesh, Rajasthan, these are the states. Similarly, if you see the heavy metals, industrial discharge and results in neurological damage, anemia and developmental delay. And if you see the states, UP or Kanpur, Gujarat, Vapi, and if you see the UP or Kanpur, if you see the especially the western UP, Kanpur is the place where you will find industrial belt in Uttar Pradesh. So let's say Agra, Kanpur, these are the places where industries are there. So industrial waste is something polluting the groundwater through these heavy metals. And next is your microbial pathogen, that is sewage infiltration. जो sewage water अच्छी से यदि ठीक से treatment हला नहीं, that simply mix with the groundwater and results in the cholera, dysentery, hepatitis, that is called the jaundice. If you see the Odisha region, UP, urban cluster, etc., these are the places. Okay, so as per the 2024 Central Groundwater Board report, nitrate content यदि आपण देखिबे 20%, more than the 20% of samples contaminated in 440 district. So this is as per the 2020 Central Groundwater Board report, more than the 20% of samples having the nitrate. And if you see 9.0% samples exceed the WHO limit with respect to the fluoride. Ethical fluoride content is okay, but beyond that something leads to degradation or health hazardous. Similarly, arsenic, if you see, detected in the 29 districts of UP, खास करके western UP, Bagpat area, which is again, let me tell you, it's very close to the India capital, that is the Delhi. So nitrate, fluoride, arsenic and uranium, these are the major pollutant with respect to the groundwater contamination. Okay, simply iron भी देखिए, iron content is something 13% of samples exceeded safe limit, right? Okay, then why the crisis persist? काहे की crisis देखिए कम्युनिटी. The Central Groundwater Board and CPCB, Central Pollution Control Board, and SPCB, that is the State Pollution Control Board, and Jal Shakti Ministry work in silos. Fragmented governance. What is the meaning of fragmented governance? Fragmented governance होची simple. अपन गोटे छोटो example देवी in our country. यदि अपन road देखिए, road infrastructure, let's say that comes under the PWD department. So after the road construction, you will find road digging of the road, either pipe installation करा जाउची, let's say sewage water pipe, or water connection installation करा जाउची, or any such cable installation करा जाउची. So simply you will find जितने जो department to जो कामो पड़ला, they will simply start digging the road. Okay, and after that they will simply ताकू मेकओवर भी करती और सिंपली ताकू पूर्ण तरह फिनिशिंग माने रोड को फिर से ठीक करिके से माने जानती. फिर पूर्ण तरह आउट डिपार्टमेंट आसीबो, दे विल स्टार्ट डिगिंग द रोड. सो ये जो मल्टीपल डिगिंग ऑफ द रोड्स एंड डैमेज ऑफ द रोड, दैट लीड्स टू व्हाट? रिसोर्स वेस्टेज ऑफ सिंपली रिसोर्सेस. Why is this happening in our country? Only because of the lack of coordination. So when we'll constructing the road, before the construction we must coordinate with the other departments, and we will install all those, like let's say water supply pipeline, let's say system for the cable connection, okay, let's say pipe for the sewage water. So if we will have that coordination, then multiple times हमें road को digging करीबानी, there will not be damages, जो resources waste हो, that will be minimized,
प्लस जो पब्लिक को जो बेनिफिट होची से बेनिफिट जो मिलूनी सेटा भी से प्रॉब्लम होची दैट विल बी मिनिमाइज्ड. So weak enforcement, if you see, Water Act 1974 does not adequately cover the groundwater pollution. Let me tell you, groundwater regulation को लेके there is no such law exclusively in India. That is something lacuna in terms of the legal aspect. कहेंगी now what this central groundwater जो अपन को rules अच्छी that simply says if a particular area belongs to you, below that area whatever water is available beneath that earth that is belong to that person. तमाने जो एरियाटी आपनकर अच्छी लैंड एरियाटी आपन को ओनरशिप रे ता तळे जेतिकी पानी अच्छी इट बिलोंग्स टू यू. सो देयर इज नो सच कंट्रोल ओवर देयर एक्सट्रैक्शन और एनीथिंग. एंड इन फैक्ट लेट मी टेल यू, ओडिशा रे आपन देखिबे इंडस्ट्रीज जो गुडी को ग्राउंड वाटर सेमान को सप्लाई करा जाउची. ओके, इंडस्ट्री दे आर यूजिंग द ग्राउंड वाटर व्हिच इज समथिंग हॉरिबल काइंड ऑफ थिंग. सो I mean, as per the stricter regulations, industry must use the supply of water that is coming from the river or any such places, not the groundwater. Groundwater is exclusively or must be used for the household consumption. Okay, so this is one aspect. Poor monitoring, lack of real-time, publicly accessible data. What is this lack of real-time? Real-time in the sense कि whenever and whatever, let's say, if industry is established, one industry is established or a commercial complex is established, we need to monitor whether that commercial place or that industry using the groundwater or not. If they are using, then is there any restriction or regulation over there? किसी regulation अच्छी की restriction अच्छी की? So all those things we need to keep in our mind. So I think municipality or the state government has the role over here, or the onus lies with the state government and their authority. Simply you will see the over extraction concentrates pollutants and mobilizes toxin. Okay, तो over extraction in the sense in the Bangalore case में अपन को कहली, due to overuse of the groundwater started contaminating and pollutant of the nearby area started mixing with the groundwater. तो ये concentration of the pollutants and toxins जो mobilize होची, that needs to be done. Okay, now coming to the way forward, कौन future रे करा जाई परियो. The first one is the National Groundwater Pollution Control Framework. So first we need to have a proper law with respect to the groundwater extraction, the use over the groundwater, or if any industry, household, any such commercial places they are using the groundwater, then must be a regulation. Modern monitoring and early warning system. What is this modern monitoring and early warning system? That is what you call जमती आम कहे कि बिफोर सेटिंग ऑफ एन इंडस्ट्री आम ताको परमिशन दबा एवं तापरे आम जमती बर्तमान आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पाई वी हैव मीटर. ओके, नाउ वी हैव स्टार्टेड इंस्टॉलिंग द गैस कनेक्शन. वाटर सप्लाई रो भी मीटर इंस्टॉल करा जाउची, बट नॉट रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर ऊपर कौन कंट्रोल ना. सप्लाई ऑफ वाटर जो पाइप्ड वाटर सप्लाई करा जाउची, on that we are installing the meter कि how much water is being used, but groundwater ऊपर नहीं. So that needs regulation. Okay, health intervention we need, defluoridation, safe water provision, nutrition program. Okay, for example जो रूरल सेमी अर्बन एरिया रे जोटी कूओ खोला जाउची यानी कि वेल खोला जाउची, पानी एक्सट्रैक्ट करा जाउची और लेट्स से बोरिंग करा जाउची. सो बोरिंग को सिंपली व्हाट वी आर यूजिंग, हमें बोरिंग कले पानी को ओके बोरवेल यूज कले एंड सिंपली स्टार्टेड यूजिंग द वाटर. सो बिफोर यूजिंग दैट वाटर वी नीड टू व्हाट हेल्थ इंटरवेंशन शुड बी डन. कि आगुरी आमर गोटे कनसेप्ट था कि ग्राउंड वाटर इज सेफ फॉर यूज एंड इट्स क्लीन एंड प्योर, बट दिस इज नॉट द केस नाउ. ओके, सो वी नीड टू व्हाट before we use the borewell water we need to treat that water treatment. Waste management reform, so stricter industrial discharge control. Okay, industrial pollution is again यदि आपण देखिए मुझे जल्दी कहली western UP is completely the industrial belt, and due to this heavy industrialization and very small and informal industries, they are not bothered about the what we call proper regulation or mechanism. सेमानंकर एति किछि फरक पकोनी, सेमाने simply
they simply left the wastewater to flow. Okay, semanଙ୍କର treatment ଏବଂ सरकार भी is not giving that much emphasis to those small industries. Okay, the waste management reforms is also necessary, and citizens engagement, that means citizen policing you can say. If in your nearby area किसी एमती commercial activities अच्छी या commercial places अच्छी those are using the groundwater, industries अच्छी they are simply leaving the wastewater untreated. So in that case citizens awareness दरकार and citizen को complaint भी register करिबा दरकार कि what is that industry which using this water or simply leaving the wastewater into the nearby pond or wetland gudiko achi that is contaminating the groundwater. Okay, so moving to the next, inward looking policy. Unequal growth from the globalization boom led to inward looking trade policies. So basically Scott Wang je ki ochandi vice president Asia Pacific of the World Trade Center Association explained that current rise in protectionism, nationalism and inward looking trade policy is a result of unequal growth from the so-called golden era of globalization in the 90s and 2000. Okay, let me explain the background of it. Protectionism means what? Protectionism hoji restriction. You are protecting your economy. Okay, this is the opposite of the liberalization. Liberalization means what? Relaxation, opening up the economy, integration of the economy. If you see the definition of globalization, what is the meaning of globalization? Integrating the domestic economy with the global economy. That is the definition of globalization. What is the anti-globalization? Anti-globalization means reverse. That means you are protecting your economy. You are not allowing your economy to integrate with the global economy. So that is the protectionism. So protectionism leads to restriction. Protectionism is leading to the more restriction barrier with respect to the free trade. Protectionism leads to tariff. जो वर्तमान US को हमें 25% tariff will be imposed on Indian products, 50% tariff will be imposed on Indian products. These are the protectionism. That means we are not ready to accept that we'll have a better free trade mechanism with the world. तो किसी free trade agreement हो जैसे recently we have seen India and UK, we are in the negotiation with the India and European Union, but mostly if you see that every country is protecting their own interest, every country is negotiating their own interest. That means anti-globalization trend ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି. ଏବେ ଦେଖିବେ now we have started imposing restriction with respect to the migrants as well. जो illegal immigration तो छाड़ी दियंतु, that is one factor. In fact those legal immigration भी होची, issuing of visa, जो visa issue करा जाउची per year, ସେଥିରେ भी हमें restriction लगेइछु. If you see the India UK free trade, सेठी भी किछि clause लगा जाइछि कि एतिकी पर्सनल्स माने आसी परिबे UK को from India. ग्रेजुअली सेटा को रिलैक्स करा जाओ. तो ये जो एंटी ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म या प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट या नेशनलिज्म को ही हमें कहे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी. ओके, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी यार आउ गोटे इंटरप्रिटेशन होची कोन ना जेमते आपण देखिबे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. What is the meaning of import substitution? The products which we are importing from other countries will start producing in our own country or the domestic economy. That is the import substitution, or what we call the protecting our own industries by imposing higher amount of tariff. तो ये जो import substitution रो आउट इंटरप्रिटेशन होची आत्मनिर्भरता जोटा आमे कहूचे. तेणु ये जो वाइस प्रेसिडेंट स्कॉट वांग अछंदी तांको कहबा कथा होची व्हाई ऑल दीज कंट्रीज लाइक से US हो किंबा इंडिया हो, इंडिया खाली प्राइम मिनिस्टर कौन कहले वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द इंटरेस्ट ऑफ आवर फार्मर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लेट्स से डेयरी सेक्टर विल नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर इंटरेस्ट. कहीं कहले वी विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. कहीं ना जदि आम जो US आमको लगातार आम उपरे फोर्स करुच्ची या आम सहित नेगोशिएट करुच्ची, US वांट्स इंडियाज मार्केट विथ रेस्पेक्ट टू डेयरी सेक्टर. ओके, डेयरी सेक्टर, मिल्क इंडस्ट्री तार दरकार, मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, तार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दरकार. बट वी आर प्रोटेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कारण आमर तो डेयरी सेक्टर देखिए वी आर ऑल्सो डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ डेयरी सेक्टर. मिल्क प्रोडक्शन रे इंडिया इज अगेन द नंबर 1 कंट्री. बट
आम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करूँ ना, देर आर वुमेन, आई मीन लैक्स ऑफ वुमेन आर इनवॉल्व इन द डेयरी सेक्टर, खास करके आप अमूल डेयरी को जब देखिए सेठी वुमेन मैंने काम कर। सो जदि चीपर एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट विल एंटर इन टू द इंडिया, डेफिनेटली आवर इंडस्ट्री विल सफर। ओके, तेणु से कहुच्छी कि ये जो ट्रेंड चली पचर रिजन कौन, पचर रिजन हूँ गोल्डन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आम कहे व्हाट इज द गोल्डन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन ना, रिजल्ट ऑफ अनइक्वल ग्रोथ इन द गोल्डन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1990s रे जो ग्लोबलाइजेशन फेज आसला, इट वाज अ वेरी मच इंस्टेंट। ओके, एंड आप जानी थे कोल्ड वार विषय शुणी थे आप, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यूनाइटेड जो आपंकर सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक थिला जोटा बर्तमान रशिया अच्छे, इट वाज डिसइंटीग्रेटेड इन द सेंस जब एवं लैंडमास वाइज देखिए रशिया इज अगेन द लार्जेस्ट लैंडमास। आगुरी तो आहरी बड़ था व्हेन दिस यूएसएसआर वाज देयर। जो ईस्टर्न यूरोप पूरा देखुं आज, इट वाज वंस पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। सो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हला पर देयर वाज ओनली वन सुपर पावर, दैट वाज द यूएस, and US started spreading the ideology of liberalization, globalization and privatization. And then when it is started spreading the idea of this globalization, so for other countries it was a quite surprise. Suddenly se spread kariba start hala, and everyone was imposed on this ki jemti India also started taking loan from the IMF World Bank, India upare bhi impose karagala। तो सेति पई ये कहउचंदी कि बहुत गुडे कंट्रीज थला, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, and बहुत गुडे कंट्रीज थला, their economy was not like that। okay, their economy was not like that कि ସେମାନେ easily globalization को accept करि परिबे and they will go with the economy, okay, or with the changing nature of the economy। तेणु से समय रे किछि कंट्रीज जो माने क्वाइट ग्लोबलाइजेशन फ्रेंडली टाइप रो थला, सेमान तो काफी ग्रो कले, बट किछि कंट्रीज अछंदी सेमाने सफर करिछन। दैट मीन्स द अनइक्वल ग्रोथ वी हैव सीन विथ रिस्पेक्ट टू द गोल्डन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो से सही जिनस कहउछन कि पॉवर्टी काफी देखा मिली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेकिन प्रॉब्लम अच्छी, अनइवन ग्रोथ अच्छी अमंग द कंट्रीज। सो दिस वाज द मेजर रीजन कहीं कंट्रीज गुड़िक ये बिहेव करुँच बर्तमान कि टैरिफ इम्पोज करवा, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करवा सब। सो दिस इनइक्वालिटी लेड टू पब्लिक डिसकंटेंट, इन्फ्लुएंसिंग ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट, एंटी माइग्रेशन सेंटिमेंट। जस्ट मैं कहती आपको ये एंटी इमिग्रेशन जोटा वीजा रिस्ट्रिक्शन करा जाउची, एंड द प्रिफरेंस फॉर रीजनल एंड ब्लॉक बेस्ड ट्रेड मॉडल। बर्तमान जमती देखिले यूएस ब्राजिल उपर इम्पोज कला, ब्राजिल रो प्राइम मिनिस्टर इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर को फोन कले कहीं नाउ वी आर फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रिक्स कंट्रीज, वी आर फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू द साउथ साउथ कोऑपरेशन। सो फॉर अस प्रायोरिटी वुड बी आवर फ्रेंडली नेशन जो मैंने ब्रिक्स मेंबर अच्छा। तेणु से जिन कहुच्छे कि भाई दे आर कंफर्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड विद इन द ब्लॉक रादर दैन द ग्लोबल इकोनॉमीज। ओके, तेणु से वांग कौन कहते, वांग कहते स्ट्रेस दैट शिफ्ट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट, इट हैज बीन इवॉल्विंग फॉर एटलिस्ट ए डिकेड। लास्ट 10 वर्ष अधिक है ये जो टेंडेंसी कंट्रीज मान मध्य डेवलप हो। द WTO envisions a future with inclusive, sustainable globalization, but the world is still in transitional period marked by uncertainty and fragmentation। WTO को जो 90s अर्ली 90s रे 93 94 रे आनी के आसिले तापछे रीजन कौन थिला, मार्कस ट्रीटी जो आम साइन करते WTO को नहीं, तापछे रीजन कौन थिला ना बॉर्डरलेस वर्ल्ड, फ्री ट्रेड विदाउट एनी बैरियर रेस्ट्रिक्शन, आम फ्री ट्रेड को प्रमोट करि परिबा एंड विन विन सिचुएशन हो पार। ये जो विन विन सिचुएशन जो प्रोपागेंडा थिला ताकू यूएस भली डेवलप कंट्रीज ही स्प्रेड करथिले, कहीं यूएस को दरकार थिला डेवलपिंग कंट्रीज रो मार्केट गुड़िक, एवं से मार्केट एक्सेस पाई ही कहते कि दिस विल हेल्प नॉट ओनली इन डेवलप कंट्रीज बट ऑल्सो टू डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तेणु ये जिनस थिला, बट इट WTO रो सक्सेस भी डिपेंड्स कर कौन कंट्रीज मानकर बिहेवियर उपर। गोटे दीटा कंट्री जदि भाउलेट करती प्रिंसिपल को रूल को आपड़ तापर फाइन इम्पोज करदे, बट व्हाट अबाउट द लीडर, जे लीडर निजे से भाउलेट करुचे, यूएस निजे रूल भाउलेट करुचे, मल्टीपल सच कंट्रीज आर भाउलेटिंग द रूल, तो आप क्या दोष देवे। सो WTO इज क्वाइट इनइफेक्टिव इन दिस मैनर। सो WTCA
जो आपंकर अच्छी विद द हेग सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज हैज डेवलप्ड जियोपॉलिटिकल एनुअल ट्रेड रिस्क इंडेक्स। ओके, से इंडेक्स कौन कौन डिप्लोमेसी मिलिटरी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स केमती ट्रेड को इन्फ्लुएंस करुच्ची। डिप्लोमेसी मिलिटरी एंड इकोनॉमिक फैक्टर कोभली भाव में ट्रेड को अफेक्ट करुच्ची। एंड 2024 रीडिंग शोड द ट्रेड रिस्क एट देयर हाईएस्ट सिंस 2019। 2024 सबुठू अधिका आपणकर ट्रेड पाई रिस्कर थिला कहीं ये जिनस होची आपण देखो रशिया यूक्रेन वॉर है, इज्राएल ईरान रो टेंशन है, इज्राएल हमास टेंशन है, बट एक्चुअली सेठी मझे किए अच्छी पालेस्टाइन है। तो ये जो तापर धीरे धीरे आप देखिए जो यूएस ईरान रो भी वॉर स्टार्ट हो गला, एपटे इंडिया एंड पाकिस्तान साउथ एशिया रे चली। सो मल्टीपल्स जियोपॉलिटिकल सेपटे आप साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आप ऑलरेडी जानी, जापान नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी आप जानी। सो मल्टीपल्स जियोपॉलिटिकल इश्यू कौन करुच्ची कोट ना कोटी ट्रेड को लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करुच्ची, बैरियर क्रिएट करुच्ची। ओके, सो दिस इज व्हाट this geopolitical annual trade risk index is saying 2024 is the riskier or the highest risk in terms of trade. Moving to the AU Small Finance Bank. AU Small Finance Bank gets universal banking license from the RBI. Okay, देखो AU Small Finance Bank you might have seen. तो RBI obviously the apex body which has given the authority or grant to AU Small Finance Bank as a universal banking license। यार माने कौन ना AU को जो आगुरी परमिशन मिलता कि टू बी फंक्शन एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक से बर्तमान यूनिवर्सल बैंक टाइप रो फंक्शन करिवो, लाइक गोटे रेगुलर कमर्शियल बैंक टाइप जमती SBI HDFC ICICI ए टाइप से माने फंक्शन करेंगे। ये जो दुईटी टर्मिनोलॉजी अच्छी स्मॉल फाइनेंस एंड यूनिवर्सल बैंकिंग भितर जदि आप डिफरेंस देखिए कौन फर्स्ट देखो देन आई विल कम टू द प्रीवियस स्लाइड। ऑब्जेक्टिव कौन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑब्जेक्टिव थिला 2014 रे नचिकेत मोर कमिटी गोटे फॉर्म करा जाइतला व्हेन द रघुराम जी राजन वाज द गवर्नर ऑफ द RBI एंड नचिकेत मोर कमिटी सजेस्ट करथिला कि वी नीड मोर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक सच बैंक्स ये कमिटी सजेस्ट करथिला। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन देखो it will promote financial inclusion by providing basic banking services को जगह unserved and underserved areas जो जगह normal banking operation नहीं, जो जगह bricks and mortar banking system नहीं, interior part of the rural area जो households माने low income households small business persons farmers माने अच्छन से जगह ये financial inclusion करेबो। financial inclusion means that every individual should get the banking service, should have a bank account। कारण आम बर्तमान जो गवर्नमेंट रो सब्सिडीज अच्छी वेलफेयर स्कीम्स गुड़िक अच्छी आम ताको बैंकिंग या डायरेक्ट सब्सिडीज को शिफ्ट करूँ दैट विल बी ट्रांसफर स्ट्रेट टू योर बैंक अकाउंट। फॉर दैट एवरी इंडिविजुअल शुड हैव ए बैंक अकाउंट, दोज आर द रियल बेनिफिशियरीज। यूनिवर्सल बैंकिंग कौन देखो फुल स्केल बैंकिंग सर्विसेज यानी कि नो सच रेस्ट्रिक्शन। ओके, जमती एवं देखिए यार पूर्व स्लाइड को देखो बर्तमान AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जदि यूनिवर्सल बैंकिंग हिसाब से ऑपरेट करुच्ची कौन कौन फैसिलिटीज तक मिल ऑफर द फुल रेंज ऑफ रिटेल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज समस्त को से दे परिबो, रिटेलर वाला को दे परिबो, हाई एंड कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स मान को दे परिबो, कॉर्पोरेट सेक्टर को दे परिबो, हाई एंड इन्वेस्टमेंट भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करि परिबो। सिमिलरली इफ यू सी एक्सपांडेड जियोग्राफिकल रीच जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप डिस्कस करी तापाई सर्टन परसेंटेज ऑफ ब्रांचेस मस्ट बी ओपन इन द अंडरसर्व्ड रूरल और सेमी अर्बन एरियाज तापाई कंपलसरी प्रोविजन अच्छी स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। इफ यू सी इन केस ऑफ यूनिवर्सल बैंक से भली कौन प्रोविजन नहीं, से माने यूनिवर्सली आज पर देयर विल से माने जोटी भी चाहिए बैंकिंग तंगर ब्रांच ओपन करि परिबे। सर्व ऑल कस्टमर सेगमेंट नॉट जस्ट अंडरसर्व्ड एंड अनबैंक्ड ग्रुप्स, तेणु समस्त को मैंने सर्विस दे परिबे, नॉट ओनली द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सेम देखो स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड इन द प्रोडक्ट रेंज
फोकस ऑन द स्मॉल टिकेट लोन्स, यानी कि 25 लाख पर्यंत लोन, यार जो मेजॉरिटी ऑफ द लोन ना से 25 लाख पर्यंत दे पार। अच्छा 25 लाख टंकार लोन कौ मैंने ने, जो मैंने स्मॉल बिजनेस वाला ने, जो मैंने एमएसएमई सेक्टर्स गुड़िक ने, तेणु से कहुच्छी यार मेन आइडिया था स्मॉल फाइनेंस बैंक रो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करवा, फार्मर वीकर सेक्शन, स्मॉल स्टार्टअप्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लेट्स से एसएचजी ग्रुप्स एमानंकु प्रमोट करवा, इनकरेज करवा, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा। सिमिलरली ब्रॉड स्कोप जदि आपण देखिए, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड फाइनेंस एक्सेट्रा, दीज आर द यूनिवर्सल बैंकिंग रो फीचर्स गुड़िक, एथिरे कौनसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं। सेमती रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखो, मस्ट मेंटेन एटलीस्ट 75% ऑफ द एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट टुवर्ड्स द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कौन, सरकार किसी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करिसेंती टू बी एज द प्रायोरिटी सेक्टर। फॉर एग्जांपल जमती फार्मर्स, वीकर सेक्शन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, लोन फॉर द ग्रीन एनर्जी एक्सपांशन, ग्रीन एनर्जी इंस्टॉलेशन, जमती आपण सोलार रूफटॉप आपण इंस्टॉल करूछन, दीज आर द प्रायोरिटी सेक्टर। कहीं प्रायोरिटी सेक्टर, दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। तेणु 75% तार जो टोटाल लोन अमाउंट अच्छी से लोन आउ क्या दो, बट 75% लोन तार प्रायोरिटी सेक्टर को आसबार अच्छे। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, 50% ऑफ द लोन मुझे कहते आपन को 25 लाख टंका या से कम हवा दरकार। तेणु 50% जदि 25 लाख टंकार लोन, तो मुझे कहली स्मॉल बिजनेस माने ही नेबे। बट एटा देखंतु या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग केते, यूनिवर्सल बैंकिंग पाई ओनली 40%। ओके 40% केवल तब प्रायोरिटी सेक्टर को, बाकी से 60% जहाँ को भी चाहिए दे पार। बट एटा 75%। यार देखो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल केते 200 करोड़, कहीं कम अच्छी कारण जेहेतु डीलिंग विद स्मॉल माइक्रो फाइनेंसेस, तेणु अधिका कैपिटल दरकार नहीं। यहाँ कैपिटल केते देखो 500 करोड़ फॉर द प्राइवेट सेक्टर, 300 करोड़ फॉर द फॉरेन बैंक्स यूनिवर्सल बैंकिंग रे। ओके सेमती आप कस्टमर बेस देखो, एमानकर प्राइमरीली रूरल सेमी अर्बन कस्टमर, स्मॉल बोरोयर, माइक्रो एंटरप्राइजेस, आंकर किए देखो कॉर्पोरेट, लार्ज इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, हाई नेटवर्थ इनकम ग्रुप, एमानकर जोग्राफिकल रीच देखो रेस्ट्रिक्शन अच्छी कारण मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस गुड़िक मैंने रूरल एरिया रे ऑपरेट करेंगे। एमाने देखो कौटी ऑपरेट करुँच, एमाने करेंगे ओवरसीज ऑपरेट करेंगे, आरबी अप्रूवल दब एवं यूनिवर्सली अप्रूव करेंगे, ऑपरेट करेंगे। एग्जाम्पल देखो स्मॉल फाइनेंस एक तो EU डिस्कस आम करुचे, उज्जीवन विषय शुणी थे आप, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटाज अच्छी, ज्ञान स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छी, बाकी गुड़िक हूँ यूनिवर्सल जब देखिए SBI, HDFC, ICICI एक्सेट्रा। ट्रांजिशन पाथ देखिए कैन अप्लाई टू बिकम ए यूनिवर्सल बैंक आफ्टर मिनिमम 5 years। ओके यहाँ ही तांकर मोटिवेशन कि आम जब स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कलु, डिसिप्लिन मैनर ऑपरेट कलु, आमको रिवार्ड कौन मिलो ना मिनिमम 5 years पर यू विल बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिवर्सल बैंकिंग एंड ऑलरेडी फुल सर्विस फ्रॉम अच्छे, तो से किसी आवश्यकता ना। नेक्स्ट देखिए CAG एंड PAC। CAG PAC को लेकिन CM6 PAC प्रूव इनटू CAG रिपोर्ट सेज आम आदमी पार्टी मिसयूज ऑफ फंड्स, एट दिल्ली चीफ मिनिस्टर का रिक्वेस्ट था। बट ये आम इंपोर्टेंट हूँ CAG और PAC विषय स्लाइटली नजर पकेबा। CAG क्या सहित डील करुँच, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटा आर्टिकल 148 रे मेंशन अच्छी। ओके पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन पार्ट रे अच्छी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू ऑडिट all receipts and expenditure of the union and the states। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू ऑडिट, ये पोस्ट मॉर्टम वाला केस करिवो, माने आफ्टर एक्सपेंसेस ये ऑडिट करिवो। CAG डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी कि केते आलोकेट करा जीवो नहीं, ये डिसाइड से करि परिवो नहीं। ओनली द ऑडिट पार्ट जदियो ना रे अछि कंट्रोलर एंड ऑडिट, बट ऑडिट ही से करि परिवो, कंट्रोल करि परिवो नहीं कि को डिपार्टमेंट को, को मिनिस्ट्री को, को स्कीम अंडर केते खर्च करा जीवो। दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ CAG, एटा को मन रखते हुए। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर देखो, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके टेन्योर 6 years until age of 65, so obviously those senior bureaucrats they get the vote
and removal like a Supreme Court judge by the President on grounds of proved misbehavior, incapacity with Parliament's approval. Okay. तो जे आपणकर सुप्रीम कोर्ट जज अच्छा से टाइप ही एम को मिल कौन प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी जोटा कि सुप्रीम कोर्ट जज हो कि हाई कोर्ट जज हो जो भाई भाव रिमूव कराए एम को भी सिमिलर टाइप रिमूव करा पार. इफ यू सी द फंक्शन आर्टिकल 149 एंड CAG's ड्यूटीज पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 ऑडिट्स यूनियन स्टेट गवर्नमेंट एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स. ओके सपोज जमती गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गोटे यूनिवर्सिटी ओके कंप्लीटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट आउ किछि अछि देखिबे आपण जोटा कि पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट. तेणु जेकोसी टाइप इंस्टीट्यूट हो से करियो ऑडिट्स गवर्नमेंट कंपनीज autonomous bodies IIT AIMS etc funded by the government and report कहा को करिवो public accounts appropriate accounts and finance accounts ये report ये prepare करिवो. देखिए चलो role in accountability is known as the watchdog or guardian of the public purse or guardian of the public purse. watchdog बोली को आ जाए watchdog कहीं भी ना नजर रखे जाए financial aspect ऊपर. Ensure funds are used as per the Parliament's intent. जो पर्पस पाई फंड को रिलीज करा जाइथिबो बजेट माध्यम रे सेति पाई ही खर्च करा जिवो. डज नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी ये पॉलिसी को नहीं कौन सी क्वेश्चन रेज करि परिबो नाही ओनली द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एंड लीगलिटी को से क्रॉस चेक करिवो. सिंपली पब्लिक अकाउंट्स कमिटी देखिबे ए पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमिटी दैट एग्जामिन्स CAG's report to ensure public money is spent according to the parliament's will or the provision or the approval of the parliament. Okay, composed of members both from the Lok Sabha and Rajya Sabha दुईटी जाक सदस्य माने सदन रा मेंबर रहिबे. लोक सभा रा रहिबे 15 राज्य सभा रा रहिबे 7 headed by an opposition MP. generally public accounts committee opposition party रा जने लीडर हेड करन can summon official seek clarification recommend action but cannot enforce the punishment. तो एक्शन को रिकमेंड करि परिबे बट किछि सेमती एनफोर्समेंट एजेंसी सेमन का पाखरे नाही जाको से माने एनफोर्समेंट करि परिबे. वंस रिकमेंड कला पर गवर्नमेंट जा एक्शन नबो. नेक्स्ट कबूतरखाना देखिबा. बॉम्बे हाई कोर्ट डिड नॉट ऑर्डर द क्लोजर ऑफ कबूतरखानास बट ह्यूमन हेल्थ इज ऑफ इंपोर्टेंस. देखिबा कोन एटा Kabutarkhanas, public spots in Mumbai where pigeons are fed, often maintained for religious and community purposes. This is the case not for the Mumbai. This is the case in every metro city. आपन देखिबे Delhi, Chennai, etc. Now, this practice you must have seen in Bhubaneswar as well. Bombay Municipal Corporation decision. The जोटा ब्रिहन मुंबई बोली कह ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू क्लोज सर्टन कबूतरखाना साइटिंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न. पिटिशन फाइल्ड इंडिविजुअल्स हु फीड पिजियंस चैलेंज्ड द BMC ऑर्डर इन बॉम्बे हाई कोर्ट. जो मैंने पारा को खाइबा को दउथिले से माने चैलेंज कले. कोर्ट ऑब्जर्वेशन कोन देखो नो कोर्ट ऑर्डर क्लोजर. हाई कोर्ट क्लैरिफाइड इट हैज नॉट ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ कबूतरखानास. It merely refused interim relief to the petitioner. Petitioner को कौन से रिलीफ मिलेबो नाही यानी कि जहाँ ब्रिहन मुंबई चाहूँगी सेटा करिबो बट बंद करबा पे ऑर्डर देई नाही. पब्लिक हेल्थ इज मारामाउंट स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन एंड द चिल्ड्रेन. एक्चुअली यदि आपण देखिबे जो पिजियन आपनकर अछि या पारा जोटा हम कहूचे कबूतर तारो सीट जोटा अछि ओके तांकर जो एस्क्राटा अछि प्लस तांकर जो फीदर गुड़िक अच्छे ना से गोटे टाइप रो जो एलर्जी कंटेंट आपनकर रिलीज हुए जहाँफल छोट पिला माने प्लस जो एल्डरली पॉपुलेशन अच्छे दे आर नॉट दैट मच इम्यून टू दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन और एलर्जी इन्फेक्शन. सो से ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट माने कहते कि वी शुड स्टॉप दिस लाइक फीडिंग दिस पिजियन इन लार्ज नंबर. ओके
So court कौन कौन देखो court considering appointing a committee to study the impact and recommend measures and balanced approach. High Court stressed the need to balance the tradition, religious sentiment with a public health concern. ओके तेणु ये काइंड ऑफ जो एथिकल डिलेमा टाइप रो क्वेश्चन आसे ना कि कोटा करवा उचित एठी रिलीजियस सेंटिमेंट अच्छी बट पब्लिक हेल्थ भी अच्छी सो व्हाट वी नीड टू डू तो वी नीड टू हैव ए बैलेंस सो बैलेंस पे कौन करबा को पड़िबो फर्स्ट वी शुड फॉर्म ए कमिटी एंड एज पर द कमिटी रिकमेंडेशन वी विल सी व्हाट कैन बी डन यदि हेल्थ हैजर्ड इज मोर समथिंग मोर देन द this religious sentiment तो obviously we need to take a final call okay तेणु ethics रो case studies रे भी ये जिनसों को आपण यूज करि पारिबे ठीक अछि नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट देखिबा पब्लिक हेल्थ एंगल फीडिंग pigeons in large numbers can cause histoplasmosis सिटाकोसिस एंड हाइपरसेंसिटिविटी नेमोनाइटिस जोटा निमोनिया में कौच वर्सनिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस आस्थमा सीओपीडी एंड सीनियर सिटीजन चिल्ड्रेन्स आर मोर वल्नरेबल नेक्स्ट देखिबा ऑनर किलिंग जीएस पेपर 1 रो गोटे टॉपिक फादर अंकल बुक्ड इन सस्पेक्टेड ऑनर किलिंग ऑफ गुजरात टीम Location Bhavnagar district Gujarat. Victim 19-year-old woman accused her father and uncle killed her. Suspected honor killing linked to her relationship with a man from the another community. So ये गुजरात रही जी. This is practiced in southern state also, and you will find such incident in the northwestern part of India, western उत्तर प्रदेश यूपी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यूपी पंजाब हरियाणा राजस्थान इनफैक्ट ई जगह आपन को देखा मिले सो व्हाट इज दिस ऑनर किलिंग आम देखा ऑनर किलिंग हूँ किलिंग समवन टू प्रोटेक्ट योर ऑनर किलिंग समवन टू प्रोटेक्ट योर ऑनर इट रेफर्स टू ए मर्डर ऑफ ए फैमिली और कम्युनिटी मेंबर यूजुअली वुमेन बाय रिलेटिव्स और कम्युनिटी मेंबर्स फॉर allegedly bringing dishonor upon the family जदि dishonor कहीं आणुची ना गोटे अलग कास्ट रे मैरिज करुची गोटे हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट ये भितर जो जमती सरकार बर्तमान प्रमोट करुचंदी इनफैक्ट ओडिशा गवर्नमेंट इज गिविंग मनी इफ समवन फ्रॉम हायर कास्ट इज मैरिंग टू ए लोअर कास्ट तो सरकार आई थिंक 1.5 lakhs रो किछि रिवार्ड दउचंदी बट instead of that these areas एठी आपनकर ऑनर किलिंग देखिबा को मिलुची डिसऑनर इज ऑफन लिंक्ड टू मैरिंग अगेंस्ट फैमिली विशेस इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप जदि आपनकर जदि कहली इंटरकास्ट आपनकर हेगला किंबा इंटर रिलीजियस जो आपनकर मुस्लिम हिंदू एनी सच थिंग रिफ्यूजल टू फॉलो द पैट्रियार्कल नॉर्म्स ओके एक्सरसाइजिंग पर्सनल ऑटोनॉमी इन लाइफस्टाइल चॉइसेस ई जगह आपन को देखा मिलूँ ऑनर किलिंग सपोज जमती गोटे टाइम रे आगू को भी डिस्कस करी राजस्थान वेस्टर्न यूपी पंजाब हरियाणा रे यू विल फाइंड द एक्टिविटीज ऑफ द खाप पंचायत दिस खाप दे जनरली कम्स विद डिफरेंट रूल्स कि हाउ वुमेन विल बिहेव हाउ वुमेन विल वेयर क्लोथ्स जमती जीन्स पिंधि पारिबे नहीं व्हेन दे गो आउटसाइड द होम सो दीज आर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन द वुमेन लीगल एस्पेक्ट जब देखिए सुप्रीम कोर्ट इन शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड ऑनर किलिंग एज ए बार्बरिक एंड सेमफुल मर्डर issued preventive remedial and punitive guidelines directed states to curb illegal khap panchayat interference in marriages okay cause कोण पाई हुए कास्ट सिस्टम एंड एंडोगामी कास्ट प्यूरिटी को प्रोटेक्ट करिवार अछि एंडोगामी जोटा कि आपनकर अलगा कास्ट जदी मैरिज होची patriarchy control over the women choices cloth how a woman will behave okay तारो decision control किए करे father या elderly people patriarchy society social stigma fear of ostracization
या जो जहाँ घरे ये केस हो से फैमिली को बॉयकट कर दिया जमी आम आगुरी कहते ना निआ पा बासंद कर ओके से टाइप ऑस्ट्रासाइज दिस इज द फियर ऑफ ऑस्ट्रासाइजेशन और आउटकास्ट फ्रॉम ओन सोसाइटी कम्युनिटी प्रेशर इनफॉर्मल सोशल सैंक्शंस ओके कारण आप कम्युनिटी लिविंग करूँ सोसाइटी इज ऑल अबाउट द कम्युनिटी लिविंग राइट तो से जिनस भी वीक लॉ एनफोर्समेंट इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर कपल्स कारण जेहेतु इनएडिक्वेट पुलिस प्रोटेक्शन ठीक ना या पुलिस एवं खाप पंचायत सहित भी नेक्सस रोचे बाय गिविंग सम मनी पुलिस कही दूची भाई से मैंने लुचिकी अच्छा सो दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन कॉन्सिक्वेंसेस कौन वायोलेशन ऑफ द आर्टिकल 14, 15 and 21 इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी परपिचुएशन ऑफ कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी तेणु आगुरी ये जो इंटरकास्ट मैरिज को सरकार कहीं प्रमोट करूँ ओनली टू रिड्यूस द कास्ट रिजिडिटी बट दिस विल बी द केस देन ऑब्वियसली इट विल रिमेन इन आवर सोसाइटी इट विल प्रिवेल इन आवर सोसाइटी इरोजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन फेवर ऑफ द सोशल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कौन ना बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन ना आर्टिकल 14 कौन इक्वालिटी कौन आर्टिकल 15 कौन नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एक्सेट्रा 21 कौच एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू डिसाइड कि से कौ टाइप बिहेव कर व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू वेयर व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू हैव और कंज्यूम व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू डू तेणु ये जो 21 आर्टिकल को भी वायोलेट करुँच कौटा सोशल मोरालिटी जो सोशल ओब्लिगेशन जो कम्युनिटी स्टाइल लिविंग अच्छी दैट इज द केस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फॉर सुपरवाइजर सॉरी सर्वाइवर्स एंड फैमिलीज ऑब्वियसली कारण डरिकी ही ऑब्वियसली रही गवर्नमेंट एंड जुडिशियल मेजर्स गवर्नमेंट कौन स्टेप्स नहीं थे देखा एक तो हाईकोर्टर सॉरी सुप्रीम कोर्टर केस में आपको कहली लॉ कमिशन 242 रिपोर्ट रिकमेंडेड सेपरेट ऑफेंस फॉर द ऑनर किलिंग गोटे सेपरेट लॉ नहीं कि आसवा दरकार कंट्री वाइड मणिपुर एंड हरियाणा पुलिस स्पेशल सेल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कपल्स स्पेशल सेल यानी पुलिस सेल जमी आम महिला सेल हो सेमती एम भी गोटे स्पेशल सेल हवा निहाती दरकार ओके प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफेरेंस विथ द फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बिल 2010 तेणु फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस माने कौन ना इफ ए कपल इज रेडी टू मैरिज एंड दे आर अडल्ट देन नो अदर और एक्सटर्नल इंटरवेंशन कैन सेपरेट देम और नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन शुड बी डन challenges deep rooted cultural acceptance of such violence everyone is accepting okay ja hochi ठीक hochi okay so deep rooted cultural acceptance reluctance of witness or depose against family members तेणु पूरा कम्युनिटी कहा सपोर्ट रे अच्छी जे ऑनर किलिंग करूची जो फैमिली इन्वॉल्व अच्छी नो वन इज अपोजिंग दैट इंसिडेंट पॉलिटिकल हेजिटेंसी टू एलिनेट सर्टन वोट बैंक्स खास करके जदि आपण देखिबे पॉलिटिकल विल भी कोटे ना कोटे लैकुना रोची कहीं ना से माने चाहूना खाप पंचायत नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट जब देखिए नॉर्दर्न बेल्ट देखिए खाप पंचायत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग वोट बैंक सो गोइंग अगेंस्ट द खाप पंचायत मीन्स गोइंग अगेंस्ट द वोट ओके दिस इज व्हाट द परसेप्शन इज खाप पंचायत विषय यदि स्लाइटली मुझे कहि ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड काउंसिल traditional caste-based council found in primarily in northern India, Haryana, western Uttar Pradesh, Rajasthan, parts of Punjab and Madhya Pradesh. These are informal. Informal kahingi? Not made by any law or extra constitutional, neither constitutional nor statutory body, but that claim to resolve dispute. ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି किसी यदि बिफोर गोइंग टू द जुडिशियरी और टेकिंग द हेल्प ऑफ जुडिशियरी खाप पंचायत पाखक आसवा दरकार डिस्प्यूट रिजल्व करेंगे सोशल नॉर्म्स को एनफोर्स करेंगे कहार इंटरकास्ट मैरिज किसी गोटे इश्यू है कहार डिस्प्यूट है से माने ही रिजल्व करेंगे एंड मेंटेन द कास्ट कम्युनिटी डिसिप्लिन एज वेल ओके कास्ट डिसिप्लिन कम्युनिटी डिसिप्लिन जेंडर डिसिप्लिन ये कम हो खाप पंचायत केबेठू अच्छी देखो मिडिवल टाइम रो अच्छी खाप माने कौन ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस इनहाबिटेड बाय द पीपल ऑफ द सेम गोत्र और क्लान और कास्ट ओके एंड हेडेड बाय द एल्डर यूजुअली मेल डिसीजंस आर टेकन कलेक्टिवली आप देखिए मूवी रे जमती पंच ओके पंच
ପାଞ୍ଚଟି ଲୋକ ବସିଥିବେ, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଯେମିତି ଆମେ କହୁନା ସେ ଟାଇପ୍ର 5 ଜଣ ଏଲ୍ଡରଲି ପିପୁଲ୍ ବସିଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ରୁଲ୍, मेडिएशन इन द सिविल डिस्प्यूट, जदि कहार जमी जमा घर बाड़ी सब डिस्प्यूट है मेडिएशन करती। कोऑर्डिनेशन ऑन द एग्रीकल्चर एंड वाटर शेयरिंग, जेहेतु कम्युनिटी लिविंग अच्छी तेणु ये गोटे मेरिट आप कहींपर। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द सोशल कॉजेस, जदि किसी प्रॉब्लम है एवरीवन विल कम फॉरवर्ड। नेगेटिव कौन देखो, रिग्रेसिव सोशल नॉर्म, आज पर्यंत प्रोग्रेसिव एक्सेप्ट कर पारना से 50 वर्ष 100 वर्ष पुराना ट्रेडिशन में बंची। इंटरकास्ट इंटर रिलीजन को ओपोज करुँच। ओके, ऑनर किलिंग चली, सोशल बॉयकॉट चली, फोर्स्ड सेपरेशन चली, रेस्ट्रिक्टिंग वुमेन ड्रेस क्लोथ्स मोबिलिटी एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ओके, तेणु नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट रू जदि गोटे वुमेन इज गेटिंग सक्सेस दैट इज क्वाइट रेस्पेक्टेबल। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जदि देखिए नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, बट जदि किसी वायलेंस ये सब हुए तो ये जो धारा गुड़िक अच्छी दैट विल बी एप्लिकेबल। फाइन। सुप्रीम कोर्ट शक्ति बाहिनी ऑलरेडी मैं आपको कही प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट सपोर्टेड से प्रोवाइड क्विक लो कॉस्ट जस्टिस, प्रिजर्व सोशल कोहेसन इन द रूरल एरियाज कम्युनिटी लिविंग पाई, हैंडल इश्यूज इग्नोर्ड बाय द फॉर्मल कोर्ट्स, फॉर्मल कोर्ट जोटा को इग्नोर करे माने मैनेज करती। क्रिटिक्स कहते कौन ना पैट्रियार्की को इम्पोज करा जाउची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वायोलेट करा जाउची, कास्ट को इम्पोज करा जाउची, फ्यूडलिज्म को इम्पोज करा जाउची, रूल ऑफ लॉ को वायोलेट करा जाउची, ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करा जाउची एक्सेट्रा। मूविंग टू द नेक्स्ट, फियर ऑफ लूजिंग स्कूल्स। खास करके यूपी रो न्यूज एटा फियर ऑफ लूजिंग स्कूल्स कौन ना, इन मेनी रूरल एंड ट्राइबल एरियाज स्कूल इज मोर दैन जस्ट ए प्लेस फॉर एजुकेशन। स्कूल कौन ना जे एजुकेशन प्रोवाइड करे, एंड एजुकेशन कौन, एजुकेशन हेल्प्स अस इन टर्म्स ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। गोटे लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास पाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, कारण एजुकेशन थिले द होल जेनरेशन विल बी शिफ्टेड टू ए नेक्स्ट लेवल। सोशल मोबिलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट अच्छे, सो इट्स ए सिंबल ऑफ कम्युनिटी प्राइड एंड आइडेंटिटी। क्लोजिंग ए स्कूल कहीं क्लोज कर दिया जाउची या मर्ज कर दिया जाउची यूपी रे खास करके। इनफैक्ट दिस थिंग वी हैव सीन इन ओडिशा एज वेल ना। लो एनरोलमेंट रेशियो, लो एनरोलमेंट माने टोटल 5टी क्लास मिसे 10 जन थे, गोटे गोटे क्लास रे कहीं नथिबे, टीचर थिबे गोटे कि 2टी टीचर थिबे। फंडिंग कट और कंसोलिडेशन पाई मर्जर पाई आज ए रिजल्ट कौन होची ना, लॉस ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी, लोकल लैंग्वेज टीचिंग डिस्कंटिन्यू हो जाउची, इंडिजिनस नॉलेज जो अच्छी सी भी आपणकर डिस्कंटिन्यू हो जाउची। तो लॉस ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी। ओके, कारण गोटे स्कूल गोटे जगार अच्छी माने लेट्स से गोटे ट्राइबल बेल्ट रे गोटे स्कूलटे थिला, आम ताको मर्ज करदेले, ताको नहीं पड़े 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर डिस्टेंस आउ गोटे पाखक ता सहित मर्ज कले, आम ताको फोर्स कले कि भाई ये जो 10 जन भी पढ़ुते से जगार या इन फ्यूचर जो मैंने पढ़े से मैंने चाहिए 30-40 किलोमीटर्स दे हैव टू ट्रैवल टू गेट द एक्सेस ऑफ स्कूल। ता माने ये जो 30-40 किलोमीटर डिस्टेंस पूर्व जो स्कूलटी थिला बोध हुए से लोकल लैंग्वेज रे पढ़ुते, से माने इंडिजिनस कल्चरल लर्निंग दिया जाउथला स्टूडेंट्स मानकु। नाउ से जिनस विल बी डिस्कंटिन्यूड। सोशल कैपिटल आपणकर इरोड हम। सोशल कैपिटल इन द सेंस कौन ना, आप देखिए पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग गोटे करा जाए पीटीएम। ओके, सेठी इंटरैक्शन हुए, सेठी न्यू आइडियाज आसे। ओके, जोटा कि सोशल कैपिटल बोली कहूँ, कनेक्शंस आपन को देखा मिले, इवेंट्स देखा मिले, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखा मिले, एंगेजमेंट देखा मिले। नाउ दैट विल आल्सो बी इरोडेड। ओबियसली जदि आप डिस्टेंस करेंगे स्कूल को बंद करदे, मर्जिंग करदे, सबुठू हैम्पर जो मैंने अधिका हे दे आर द फीमेल। पेरेंट्स विल नेवर और विल स्टॉप सेंडिंग देम टू सो मच ऑफ डिस्टेंस बिकॉज ऑफ मल्टीपल सच रीजन्स। सेफ्टी गोटे कंसर्न, सिक्योरिटी गोटे कंसर्न, एंड ओबियसली एमती भी आम गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ाई को कहीं चाहूँचे, वी डू नॉट वांट टू गिव देम बेटर एजुकेशन, सो इट्स अनदर काइंड ऑफ थिंग कि वी कैन स्टॉप देयर एजुकेशन। Education access, school closure fear is common where government rationalization merger smaller schools, जोटी मर्जिंग कर दौरान स्कूल्स गुड़िक।
Private school in low income areas shut due to financial strain, regulatory norms. ତେଣୁ फाइनेंशियल जो प्राइवेट स्कूल गुड़िक भी अच्छे ना से भी रन करना लो इनकम प्रोफाइल लोकंर अच्छे कि सपोज गोटे जगह यदि प्राइवेट स्कूल लर्न भी कला तो से जगह जो मैंने पाठ पढ़ेबा को चाहूँ जो पेरेंट्स मैंने दे हैव टू लाइक सेंड देयर स्टूडेंट्स टू दो स्कूल एंड दे हैव टू बियर द कॉस्ट। तेणु से आप देखिए ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ी बढ़ी चलती ड्यू टू ट्रैवल डिस्टेंस, लर्निंग डिस्कंटिन्यू हो जाऊँगी, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस रे भी रोचनी एंड ग्रेटर इनइक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड आम एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट भी रखीचे, राइट टू एजुकेशन जोटा कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 इट वाज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट। साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पैक्ट फॉर स्टूडेंट्स, एंजाइटी अबाउट लिविंग फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ये भी गोटे फैक्टर कारण सोशलाइज होते से माने स्कूल रे देखा होतला। ओके, लॉस ऑफ ए फैमिलियर एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, फॉर टीचर एंड स्टाफ दे विल बिकम अनएम्प्लॉयमेंट, पेरेंट्स कंसर्न ओवर द सेफ्टी इक्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एज वेल। प्राइवेट स्कूल को पठे पारे ना, गर्ल्स केस रे सेफ्टी इज कंसर्न, जो नुआ स्कूल को जीवे सेठी क्वालिटी केमती थी। सो देयर इज समथिंग वेरी क्रूशियल और कंसर्निंग अफेयर्स। नाउ ओडिशा रिलेटेड न्यूज देखिबा, जेहेतु हैंडलूम डे सेलिब्रेट करा जायतिला, माधुरी दीक्षित वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ओडिशा हैंडलूम। अपॉइंटमेंट, बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर 1 year। Sector strength 1.3 lakh weavers and helpers in 30 districts of Odisha. They are involved in the handloom sector. Handloom is something micro, small, medium enterprises, and it is Manas, yes, true. It's true, but we need to have a proper solution. Okay, we can't simply shut down the schools because it is true in terms of, see, if you see the in terms of solution, सबुठू बेस्ट पार्ट होची ये जो प्रति 5 किलोमीटर गोटे स्कूल न करिके लेट्स हैव 30-50 किलोमीटर से गोटे स्कूल हो एंड दैट मस्ट बी रेसिडेंशियल। जति कि आपण रन करोचन इंस्टीट्यूट गुड़िक बेटर हो कि लेट्स से गोटे ब्लॉक रे गोटे स्कूल हो, राइट। गोटे स्कूल गोटे ब्लॉक रो हो या ब्लॉक रो जो डिस्टेंस को लेकिन आप देखिपारे एंड दैट मस्ट बी रेसिडेंशियल वन। तेणु मत लगुनि से जगह किसी प्रॉब्लम हो पारे जब रेसिडेंशियल है तेज जो डेली डिस्टेंस कवर करवा वुड नॉट बी ए प्रॉब्लम, राइट। एंड इट इज ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन माने सरकार जो एबे सरकार डिसीजन नेले कि भाई रजिस्ट्रेशन कम अच्छी या यू हैव टू बियर द एक्सपेंसेस आपड़ से एमती नुहे कि 2 वर्ष है आप चिंता करुवे विल शट डाउन दी स्कूल्स। It must be a matter of, let's say, from last 10 years, 8 years. So within that time frame, we could have implemented such kind of new initiative कि गोटी स्कूल कर दबा सिटी रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट दो चिल्ड्रंस कैन स्टे देयर। ओके, एंड विदिन ए ब्लॉक जदि आप गोटे स्कूल करूँ इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू गेट एक्सेस से आसिकी रेगुलरली मीट करेंगे से ये। तो ये जो आम कहे ना कि completely isolate ही जो से जिनसे भी हेनी। ओके, सो वी मस्ट हैव ए मिड वे सॉल्यूशन रादर देन सिंपली क्लोजिंग डाउन और मर्जिंग ऑफ द स्कूल्स। ओके, हैंडलूम डे रे देखिबा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जो ओडिशा रे अछि खास करके कोटपाड़ हैंडलूम फैब्रिक, बरहमपुर पाट, संबलपुरी बंध साड़ी एंड फैब्रिक, बोमकाई साड़ी एंड फैब्रिक, हाबसपुरी साड़ी एंड फैब्रिक, खंडुआ एंड मणियाबंध इकात and Dhalapathra Parda and Fabrics and Sonpur Handloom Sari. Significance: economic boost, marketing, sales. It will create or it will give employment opportunities as well because these are in small and marginal sector. Okay. Geographical indication देखिए कौन ना, it provides legal protection, prevents unauthorized use of names and enhances the export potential because it proves the authenticity of the product. MCQs देखो, which organization grants the GI tag in India? ये जो आपनकर Department for Promotion of Industry and Internal Trade provides the GI tag for the 10 years. Okay,
10 years पर पुणी थर रिन्यू हम एज पर द फ्रेश असेसमेंट. Which of the following handloom products from Odisha has received the geographical indication tag? जदि आप देखिए फर्स्ट तीनोटी अच्छी 1 2 3, फोर्थ नहीं कांचीपुरम सिल्क साड़ी को मिली नहीं. ओके. जियोग्राफिकल एनुअल ट्रेड रिस्क इंडेक्स गात्री developed by WTCA and the Hague Center for Strategic Studies measures what? Effect of geopolitical developments on global trade. ओके. ट्रेड उपर कौन रिस्क रोची जियोपोलिटिकल डेवलपमेंट रो. राइट. बी. नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर वर्टिकल्स यूज्ड इन गात्री टू असेस द ट्रेड रिस्क? डिप्लोमेटिक, मिलिटरी एंड डिप्लोमेटिक, मिलिटरी, इकोनॉमिक. ओके. तीनटा रोची टेक्नोलॉजिकल नहीं, डिप्लोमेटिक, मिलिटरी, इकोनॉमिक. फाइन. ये हूँ आपंकर मेन्स क्वेश्चन. ओके. ऑनर किलिंग को लेकिन अच्छी, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को लेकिन अच्छी. सेफ्टी इज ए कंसर्न बट दैट कैन बी मैनेज्ड रादर देन you have a multiple concern with respect to long distance schools, but you have only one problem concerned with the residential schools that can be minimized or that can be ensured. Anyway, so जो मैंने फाउंडेशन कोर्स रे जॉइन करूछंदी काली ही हमर बैच स्टार्ट ही छी. If you want to join, you can join in the complete pre-mains interview preparation batch. So code use करिवे JN Live to get the maximum discount. And if you see the total feature जो देखिए आपनकर एठी कंप्लीट फी रिफंड अच्छी जदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिलिम्स क्लियर कले. कंप्लीट NCERT रो वीडियो फ्री रोची, टेस्ट सीरीज गोटे फ्री रोची, वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस भी अच्छी, कंप्लीट नोट्स आपन को मिलिबो, मेंटरशिप सपोर्ट अच्छी, रेगुलर असेसमेंट, टेस्ट, MCQs एंड मेन्स ओरिएंटेड क्वेश्चन भी मिलिबो. तेणु यूज करंतु कोड JN Live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ओके. एंड थैंक यू. एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे करके आप मटेरियल पाइपर. परिपूर्ण बैच तो ऑलरेडी आप मानस आप एनरोल कर कि सस्मिता 11टा बेले अच्छी, सरोज सारंकर सेसन अच्छी 11टा बेले. ओके. सरोज सारंकर सेसन अच्छी. मानस आप परिपूर्ण बैच जॉइन कर आप स्केड्यूल देखि नियंतु. क्लासेस गुड़िक अच्छी परिपूर्णर केतबेले थोड़े देखि नियंतु स्केड्यूल. ओके. थैंक यू.